Paper 5, Planning, November 2015, Variant 52. It is possible to determine the relative molecular mass (mR) of a small sample of a volatile liquid by measuring its mass and then heating to vaporize it to obtain its volume as a gas. Explain how the relative molecular mass can be determined in this way. Now, since we are talking about gases and volatile liquids, so we will use the ideal gas equation. The ideal gas equation is PV is equal to nRT, or N is equal to mass upon mR. Substituting mass upon mR in this equation, we get P into V is equal to mass into R into T upon mR. Make mR the subject of the formula, so mR will be equal to mass into R into T upon P into V, and that is how we will use the ideal gas equation to obtain the mR of this volatile liquid. The volume of the vaporized sample depends on its temperature and pressure. In an experiment, a sample of volatile liquid of known mass was vaporized and its volume recorded. The pressure was correctly recorded as 101 kilopascals, but the temperature was incorrectly recorded as 50 degrees Celsius. The correct temperature was 60 degrees Celsius. By considering the effect of these different temperatures on the gas volume, explain how the value of the calculated MR would be affected. Okay, so इसमें आपका जो इक्वेशन है MR की वो है MR equals MRT upon PV as calculated या as predicted above derived. ओके तो इससे क्या पता चलता है कि MR is directly proportional to temperature and MR is inversely proportional to volume. तो इनको अब हम लोग देखते हैं. तो if MR is directly proportional to temperature, then at lower temperature the calculated MR would be lower than the actual value, right? क्योंकि temperature was incorrectly recorded as 50 in place of 60, तो कम temperature record किया. तो इसमें क्या होगा? At lower temperature, the MR calculated would be lower than the actual value. Acha, and since MR is inversely proportional to volume, as the MR calculated would be lower, the volume would be greater than the actual value. तो बेसिकली कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ जाएगा टेम्परेचर कम होने से. MR की वैल्यू कम होगी और जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगी वो ज़्यादा होगी देन द एक्चुअल वैल्यू बिकॉज ऑफ द change in the value of MR, and this is due to the error in the recording of the temperature at a lower temperature in place of the actual higher temperature. The temperature was maintained at 60 degrees Celsius, but the pressure was increased to 110 kilopascals. Would this have given an answer that was nearer to the true value of the relative molecular mass? अच्छा, अब यहाँ पे इस सवाल में जो है ना, इन्होंने ये टर्म यूज किया ट्रू वैल्यू. ठीक है ना? ये ट्रू वैल्यू जो है बेसिकली इट रेफर्स टू द कैलकुलेटेड वैल्यू. तो अगर आप इस पार्ट को
ट्रू वैल्यू को आप ये समझ के चलो कैलकुलेटेड वैल्यू। तो दिस मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको पता है कि एम आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर भी है, राइट? क्योंकि प्रेशर भी डिनोमिनेटर में आ रहा है इक्वल टू साइन के राइट साइड पे। तो एज प्रेशर increases, the MR would decrease। ठीक है ना, MR कम हो जाएगा प्रेशर बढ़ने से। सिंस द कैलकुलेटेड MR इज लोअर, क्योंकि आपने टेम्परेचर कम करके MR की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी कम हो गई थी। सिंस द कैलकुलेटेड MR इज लोअर, increasing the pressure would bring the calculated MR value closer to the actual value। ठीक है ना, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो कम थी, प्रेशर बढ़ाने से एमआर भी कम हो जाएगा। तो जब एमआर कम होगा और कैलकुलेटेड एमआर ऑलरेडी कम था, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। तो जो ट्रू वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, जो आपकी जो एमआर जो वहाँ पे एमआर जो कंपाउंड का है उसका एमआर प्रेशर बढ़ाने से कम हो जाएगा, जो कैलकुलेटेड एमआर है वो ऑलरेडी कम था, तो ये दोनों करीब करीब हो जाएंगे एक दूसरे के। तो द आंसर वुड बी मोर correct in this way by increasing the pressure. In an experiment to determine the relative molecular mass of hexane, boiling point 69 degrees Celsius, a specialist piece of apparatus called a Victor Meyer tube can be used. This consists of a long tube with a bulb at the base in which a sample can be vaporized. The tube has a side arm to allow the escape of gas from within the tube. The tube is surrounded by another which can be used to heat the contents of the first tube. A diagram of the apparatus is shown below. ये विक्टर मायर ट्यूब का डायग्राम है। ठीक है, दिस इज द विक्टर मायर ट्यूब। A sample tube containing the hexane is inserted at the top of the Victor-Meyer tube. The sample tube is small enough to fit inside the Victor-Meyer tube and falls freely onto the hot sand below. The sand will cushion its fall so that the sample tube does not break. The stopper is then quickly replaced at the top of the Victor-Meyer tube. The hot sand causes the hexane to vaporize and expel air contained in the Victor-Meyer tube. Okay, complete the diagram above to show how the apparatus should be heated using a Bunsen burner, obviously. A connection to a further apparatus which would allow the air expelled from the Victor-Meyer tube when the sample of hexane is vaporized to be collected and measured. हमेशा याद रखना, collection of gas is using a gas syringe, a graduated gas syringe, so that उसको measure भी किया जा सकता है। और क्योंकि आप नोट करो जो सैंड नजर आ रहा है अभी आपके स्क्रीन पे, उसके अराउंड एक फ्लास्क है, तो इसको आप डायरेक्ट हीट नहीं करोगे, इसके अंदर आप कोई ऐसी लिक्विड डालोगे और उसको वाटर बाथ या whatever लिक्विड यूज उसके बाद में आप इसको हीट करोगे। तो लेट्स कंप्लीट द डायग्राम नाउ। इसके अंदर हम लोग एक लिक्विड डालेंगे। अच्छा, ये लिक्विड जो हम लोग डालेंगे ना, इस लिक्विड को अगर हम वाटर रखेंगे तो वाटर जो है वो इवेपोरेट उसके होने के चांसेस हैं। तो हम लोग जो है कोई डिफरेंट लिक्विड रख देते हैं जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो फॉर इट टू बॉयल। लेट्स यूज ऑयल। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज एन
ऑयल बाथ। अच्छा, इसके नीचे हम लोग बना देते हैं आपका बंसन बर्नर। ये बंसन फ्लेम हो गई आपकी। ठीक है, इसको भी लेबल कर दो। ये आपका बंसन बर्नर हो गया। और अब आपका जो है, जो गैस एयर डिस्प्लेस होगी, उसको कलेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे गैस सिरिंज लगा दो। ये आपकी ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज हो गई। ठीक है, ये ग्रेजुएशन इसमें बना देंगे आप मेजर करने के लिए। अच्छा, और ऑब्वियसली यहाँ पे आप जो है रबर बंग भी लगाओगे, सो दैट एयर डज नॉट escape फ्रॉम द कनेक्शन या कनेक्टिंग जॉइंट्स। अब इसको लेबल कर देते हैं। ये जो आपने लगाया, ये क्या है? रबर ट्यूबिंग। और ये जो आपने बनाया पीस ऑफ apparatus, ये क्या है? ग्रेजुएटेड गैस syringe to collect the displaced air, and that is how you complete your diagram. Suggest one hazard associated with the use of hexane. अब अगर हैजर्ड हमें बताना है तो हेक्सेन जो है ऑर्गेनिक लिक्विड है, तो हेक्सेन इज फ्लेमेबल। ठीक है। और क्योंकि ऑर्गेनिक लिक्विड है तो अगर आप, और वोलेटाइल भी है, तो सांस लेंगे तो इट विल कॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। तो हेक्सेन causes breathing difficulties। इनमें से कोई एक भी पॉइंट जो आपको याद रहे, आप वो वाला लिख देंगे। आइदर हेक्सेन इज फ्लेमेबल और हेक्सेन causes breathing difficulty। With the gas collection apparatus connected to the heated Victor-Meyer tube, expelled air will be collected before the hexane is introduced. Explain why। आप जो है विक्टर मायर ट्यूब को हीट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो इसका जवाब होगा एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, and as it expands, some of it will be collected in the gas syringe before hexane is even introduced। तो बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ एयर की वजह से एयर कलेक्ट हो जाएगा हेक्सेन के इंट्रोडक्शन से पहले। ओके। एट विच स्टेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर शुड द सैंपल ट्यूब बी ड्रॉप्ड इनटू द विक्टर मायर ट्यूब। भाई जब एयर एक्सपेंड होकर कलेक्ट होगी तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आप हीट कर रहे हो ना इसको, तो यू विल वेट अंटिल द प्लंजर ऑफ द गैस सिरिंज स्टॉप्स मूविंग आउट। तो जब वो स्टॉप मूविंग आउट होगा, इसका मतलब जितनी एयर को कलेक्ट होना है वो कलेक्ट हो चुकी होगी, और ये आपका इनिशियल वॉल्यूम होगी। क्योंकि इसके बाद जब आप विक्टर मायर ट्यूब के अंदर अपना स्मॉल ट्यूब इंट्रोड्यूस करोगे, हेक्स जिसमें हेक्सेन है, उसके बाद जो एयर डिस्प्लेस होगी, तो उसकी वजह से प्लंजर फिर बाहर मूव करना शुरू करेगा। तो जब ओरिजिनली जो प्लंजर मूव कर रहा था बाहर, वो रुक जाएगा, वो आपका इनिशियल वॉल्यूम होगा। फिर आप अपनी ट्यूब डालोगे कंटेनिंग हेक्सेन, उसके बाद जो डिस्प्लेस होगा वो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो वो वॉल्यूम जो है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस होगा, नॉट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सपेंशन की वजह से कलेक्ट हो रहा है। तो इसका जवाब क्या होगा? वेट अंटिल द प्लंजर ऑफ द गैस सिरिंज stops moving out। Wait until the plunger of the gas syringe stops
moving out, and then add the tube containing hexane, and then add the tube containing hexane. State what measurements you would need to make in order to determine the relative molecular mass of hexane. तो आप पहले mass of empty tube जिसमें आप hexane डाले उसकी बात कर रहे हैं. Mass of empty tube in grams. ठीक है, इसी ट्यूब का mass of tube plus hexane in grams to identify या to calculate the mass of hexane that is added. ठीक है, temperature in degree Celsius. ठीक है, volume of gas syringe before hexane is added. ये वो वॉल्यूम है जिसमें आपका एक्सपेंडेड एयर कलेक्ट हो गई और प्लंजर बाहर निकलना रुक गया इन सेंटीमीटर क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ गैस सिरिंज आफ्टर hexane is added and the plunger stops moving out. इस चीज का ख्याल रखना क्योंकि आपने हेक्सेन डाला उसका प्लंजर बाहर मूव करेगा. जब बाहर मूव करना रुक जाएगा उसके बाद जो वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम कहलाएगी. एंड दिस विल आल्सो बी इन centimeter cube. So these are all the measurements that you would make during this experiment.